శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
వారి నిత్య కళ్యాణోత్సవానికి గాను భక్త మహాసంకల్పం చెప్పబడుతుంది. భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని తిరిగి పలకండి. హరి ఓం శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్ధినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసేన్నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్ణవం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతకే. యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాదే షష్ఠే సంవత్సరాణం మధ్యే శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ మమ. భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, మీ నామధేయాన్ని స్మరించుకోండి. మీ ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు మనసులో స్మరించుకొని స్వామివారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయవీర్య అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీనివాస కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య అనుకూల్యతా సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః
శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం శ్రితచేతన మందారం శ్రీనివాసం అహం భజే என்றும் ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெழி குரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்கிறார் நம்மாழ்வார். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. வைகான சாகம சாஸ்திர முறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுதி புண்ணிய வசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. செவிக்கலாம் கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு. கோவிந்தா கோவிந்தா. இன்று சனிக்கிழமை, விசேஷமான நன்னாள், அஸ்வினி நட்சத்திரம் மற்றும் மத்ஸ்ய ஜெயந்தி. இந்த மத்ஸ்ய ஜெயந்தி நித்யலக்ஷ்மி சமேதோ நிఖిల నిగమ వేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజ చరణ సమర్చ సక్త భక్తౌ గరక్షి నివసత హృదయే మే స్వాంగ్రే భక్తిం వితన్వన్ తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతేంద్రగం స్మరామి. శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతకే యస్యద్విరద భక్తాద్యా పారిషద్యా ప్రశ్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఖనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. ప్రాణానాగమ్య. అద్య పూర్వోక్తయవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం స్యాం శుభతిదో శ్రీ భగవదాగ్నియా భగవత్కంకరి రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీగత్పతే పురుషోత్తమశ శ్రీ భౌమలీలా సమేతస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ క్రియమాణ వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాణ అంకురారోపణ బీజావాపన రక్షాబంధన అగ్ని ప్రతిష్ఠ మాంగళ్య పూజ ప్రధాన ప్రవేశ లాజహోమాది సమస్త కర్మసో స్థండిల పరిధి పరిస్తరణాది సర్వోపకరణ ద్రవ్యశద్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం అభ్యుదగార్థం చ సద్భిర్మహాజనై సహ పుణ్యాః కర్మ కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన ప్రసమాత్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ కర్కారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్త సుచమానశేష సరస్సరస్సు పరిపూరితేషు అపో విగ్రహన్నన్ ప్రతిపాదయిష్యే గృణోమి దత్తాగం సుచిరగం సుశర్మా. ఇదమాప శివా శివతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమా పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృత అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః. అస్మిన్ కరకే ఓం యతే శతం వృణగే సహస్రం యజ్ఞయా పాశా వితతా పుత్రా తేభ్యో న ఇంద్రస్య వితోద విష్ణుర్ విశ్వే దేవా అముంచంత వరదస్వస్య. ఓం భూర్భువస్వః వరుణమావాహయామి ప్రచేతసమావాహయామి రక్తాంబరధరమావాహయామి యాదస్పతిమావాహయామి. వరుణాయ నమః పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి. వరుణాయ నమః పాద్యమర్గమాచమనయం సమర్పయామి. ఏతే స్నానప్లోత వస్త్రోత్తరీయాభరణో. వరుణాయ నమః భగవాన్ సర్వాత్మకః సప్రేత సప్రసన్నా వరదా భవంతో. అస్మిన్ కర్మణి నిర్విఘ్నేన ప్రసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. ఓం విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్ర సమన్వితం సింహాసనే సమాసీనం పీతవాసోగ్నివర్ణకం శ్రీవత్సం బ్రహ్మసూత్రం చ కౌస్తుభం చ వినైవతం జయాపతిం శృంగకేతుం సుపుష్పరథవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాముఖమర్చగేత్.
ఓం ఆగ్నేయోస్మాద్యజామహే త్వవిశ్వేశతాత్మం మహితో న సంభో వైరాజంతే సోతన్నిదత్తాం ప్రైషామదేశోపదానామనాదిహీయామి శస్తాం దనితాం దదాతో పద్మాకారమండలే ఓం భూర్భువస్సవః విశ్వక్సేనమావాహగామి శాంతమావాహగామి హరమావాహగామి అమితమావాహగామి నిత్యానపాయనమావాహగామి తద్దక్షిణే సూత్రపతిమావాహగామి వామే జయామావాహగామి సూత్రపతే జయా సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః ప్రణామం సమర్పయామి ప్రార్థనం సమర్పయామి పాద్యమర్ఘమాచమనీయం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః ఏతే స్నానప్లోతవస్త్రోత్తరీయాభరణోపవీత పుష్పగంధధూపదీపార్ఘ్య నైవేద్య తాంబూలాది సర్వోపచారాః సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః భగవాన్ సర్వాత్మనః సుప్రీత సుప్రసన్నా వరదా భవంతు సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితమస్తు అస్తు ప్రజాపతి ప్రగతాం ప్రగతాం ప్రజాపతిః శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని ఓం మతో దేవా అవంతునో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దదే పదం సమోఢమస్య భాగం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారగన్ విష్ణో కర్మాని పశ్యత గతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్జస్సకా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరగః దివీవ చక్షురా తతం తద్విప్రాసో విపన్యభోజా కృపాకం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం భద్రం కర్ణేభిः శృణుగామదేవాः భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్గజత్రాः స్థిరైరంగే స్తుష్టభాగం శస్తనూభిర్వసేమ దేవహితం యదాయుः శతమిందుశరదో ఇంతి దేవాగత్రాణశ్చక్రాజరసन्तనూనాం పుత్రాసో పిత్రయత్ర పితరో భవంతి నానో మధ్యానిర్షదాయిర్గంతో ఓహో అదితిర్యోరదితిరంతరిక్షమతిర్మాతా స పితా స పుత్రః విశ్వే దేవా అదితి పంచజనాదితిర్జాతమదితిర్జనిత్వం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్భట్కుర్వేతోపవ్యుషం యదా వై సూర్యముదేతే అధ నక్షత్రం నైతే యావత్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర చ గణ్యం పశ్యేత్ తావత్ కుర్వేతత్కార్యే స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే. స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాణ సమస్త కర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవద్యజన కర్మణి పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్రస్రవాः స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాः స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు. ఓం భూః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాణ సమస్త కర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవద్యజన కర్మణి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణి స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణి స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణి స్వస్తి. వృద్ధ్యాస్మ హవ్యే నమసోపసద్యామిత్రం దేవం మిత్రధిగన్నో అస్తు అనురాధాన్ హవిషా వర్ధగంతః శతంజీవేమ శరదస్స వీరాః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాణ సమస్త కర్మసు కర్మాభ్యుదయార్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవద్యజన కర్మణి అర్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్యతాం అర్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్యతాం అర్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్యతాం. వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాః సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామి భువస్థాన భూర్జి దదాతన మహీరణాయ చక్షసే యోవస్తివతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః విశతిర్వ మాతరః తస్మా అరంగమావభో యస్య క్షయాయ జన్పదా ఆపో జనగతాసనః.
चक्रेण देवदीद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्तिस्तनुवो वीतपृष्टाः तगामदन्तस्सधमाद्येषु वयग्गश्यामपदगोरगीनां वैश्वानरोरश्मिभिर्मापनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसापगोभिरतापरयज्ञे मापनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नै दक्षैः पुनर्हिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः संवृतकं रसं सर्वकं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संवृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमतोदकं पावमानीश्वस्तगनैः सुदुगाहि पयश्वते ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्य नीति सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरणस्य नीचा यमो राजा प्रमुणापि पुनातमा जातवेदा मोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातभेषजं षण्णो अस्तद्विपदे शंचतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्ति सोमार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासां पितरो मार्जयन्तां हृदयेच्छां दिशि गुरुपसवो मार्जयन्तां हृदयेच्छां दिश्यापो वसतिगो वनस्पतिगो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां धोदरादिरैनागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोस्पदे प्रतिजानेष्पान् स्वावेशो नमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जशस्वसन्नगेदीद्विपदेशं चतुष्पदे वास्तोस्पदे सग्मगा सगं सदा ते सक्षिमहिरन्व्यागातमत्या आवह क्षेममुतयोगे वरन्नो योग्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्धं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை சேவித்துக்கொண்டு அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, இன்று சனிக்கிழமை. மற்றொரு விசேஷம் என்னவென்றால், விஷ்ணு அதாவது தசாவதாரங்கள் எடுத்ததிலே முதல் அவதாரமான மத்ஸ்ய அவதாரம், மத்ஸ்ய ஜெயந்தி இன்று. அந்த மத்ஸ்ய அவதாரத்திலே ஆந்திர மாநிலத்திலே நாகலாபுரம் என்ற தலத்திலே அவர் மத்ஸ்ய அவதாரமாக எழுந்தருள் இருக்கிறார், வேதநாராயண சுவாமியாக. ஆகவே பக்தர்களே, இதோ அந்த மத்ஸ்ய ஜெயந்தியை பற்றி சற்று தெரிந்து கொள்ளலாம். புரா ஹயக்ரீவ மகாசுரேண சஷ்டாந்திராத் தோத்யத காண்டகல்பே நித்ரோன்முக பிரம்ம முகாத் திருத்தேஷு வேதேஸ்வதிஸ்த கிகில மத்ஸ்ய ரூபாம் என்று. அதாவது முன்பு 6வது மன்வந்தரத்தில் முடிவில் உண்டான அவாந்தர பிரளயத்திலே நித்திரை செய்து கொண்டிருந்த பிரம்மாவின் முகத்திலிருந்து ஹயக்ரீவன் என்ற பெரிய அசுரனால் வேதங்கள் அபகரிக்கப்பட்ட பொழுது நீர் மீன் வடிவில் தோன்றி விரும்பினீர் அல்லவா? இது உண்மையான பிரளயம் அன்று. 6வது மன்வந்தரத்திலே அவாந்தர பிரளயம் இல்லை. சத்யவிரதர் என்பவருடைய ஞானோபதேசத்திற்காக தோன்றிய பகவான் வைராக்கியத்தை புரட்ட பிரளயம் போன்ற ஒரு காட்சியை இந்த வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தில் மார்க்கண்டேயருக்கு காண்பித்தார் போல் காண்பித்தாராம். திராவிட மன்னனான சத்யவிரதன் ஆற்று நீரில் தர்ப்பணம் செய்கையில் அவனுடைய கூட்டிய கைகளில் நீர் பளபளப்பாக வடிவம் ஒரு மீன் குஞ்சாக காணப்பட்டதாம். அந்த ஜலத்தில் விட்டபொழுது உம்மை பயந்திருப்பதாக கண்டு அந்த முனிவர் தமது தீர்த்த பாத்திரத்தில் தமது வீட்டிற்கு கொண்டு போனாராம். பிரபோ, சில நாட்களுக்குள் நீர்
தீர்த்தா பாத்திரத்திலே இடம் போதாமல் ஒரு கிணற்றிற்கும் பிறகு குளத்திற்கும் ஏரிக்கும் மாற்றி அலைந்தீர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த பாசுரத்திலே. அதேபோல் பிறகு உமது கட்டளைப்படி அந்த முனிவரின் யோக மகிமையால் கடலுக்கு கொண்டு போகப்பட்ட நீர் பிரளயத்தை காண விரும்பி அவர் கேட்ட பொழுது 7 நாட்கள் பொறுத்து கொண்டிரு என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்து விட்டீர். அப்படி மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி திருமலையிலே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நமக்கு சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறான். அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜை ஆரம்பமாக உள்ளது. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை நடக்க அந்த நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். ஜெயா சூத்ரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு முதலில் பூஜை செய்யப்படுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாஹிக மகோத்சவ கர்மணி பிரதிசரபந்தன தேவதாராதனம் கரிஷ்யே. ஓம் சுச்சிவோ ஹவ்யேதி प्रोक्षा. ओम शन्नो मिदतां तपसो जिहर्तां स्वयंभुरग्नगे अमृतगे अमृतागा. ओम भूर्भुवस्वः शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि. शेषाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि. शेषाय नमः पाद्यमर्घमाचमनीयं समर्पयामि. एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरज्ञाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्यनैवेद्यताम्बूलादि सर्वोपचाराः. शेषाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. हरिः ओं स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिरनर्वणः. स्वस्ति पूषामसुरो ददातन स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना. स्वस्तगे वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तिग आदित्यासो भवन्तु नः. विश्वे देवानो अद्य स्वस्तगे वैश्वानरो वसरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्त्रुपव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्पं हसः. स्वस्ति मित्रावृणा स्वस्ति पद्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो ओदिते कृधे. स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमेमहि. स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमि महद्भूतं वागसं देवतानाम्. असुरग्नामिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारोहेम. अं होम च वाङ्गीरसङ्गेञ्च स्वस्त्यात्रे मनसा शतार्क्षं प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये. स्वस्ति सम्पादे स्वभयन्नो अस्तु. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீராம ஜெய ஜெய ராமா என்று ஓம் நமோ நாராயணா என்று அந்த எம்பெருமானுடைய நாமங்களை நாம் கூறிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த பக்தவத்சலன் நம்மை அருளிச் செய்வான் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. இன்று சனிக்கிழமை வேங்கடவனுக்கு விசேஷமான நாள். அதுவும் ஸ்ரீ கோதண்ட ராமசுவாமி கோவிலிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பிரம்மோற்சவத்திலே காலையிலே மோகினி அவதாரத்திலே சேவித்தோம். இரவு கருட சேவையை சேவிக்க உள்ளோம். ராமபிரானை பற்றி சற்று நினைத்து பார்க்க தோன்றுகிறது இந்த வேளையிலே. சித்திரை மாதம் என்றாலே ராமனும் ராமநாமமும் தான் நினைவிற்கு வருகிறது. காரணம் சைத்திர மாதம் எனப்பது சித்திரை மாதத்திலே அவதரித்தவன் ராமபிரான். இந்த ஆழ்வார்கள் ராமபிரானை போற்றி பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது திருமலை அப்பனிடம் சென்று பாடுகின்ற பொழுது திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு ராமாவதாரம் நினைவிற்கு வர இப்படி ஆரம்பிக்கிறாராம். கண்ணார் கடல் சூழ் இலங்கை கிரைவன் தன் திண்ணா கம்பிளக்கச் சரம் செல்வைத்தாய் விண்ணோர் தொழும் வேங்கட மாமலையே அண்ணா அடியேன் இடரை களையாயே என்று. ஒருவன் கற்றவன் என்றால் ராமனை கற்க வேண்டும் என்கிறார் நம்மாழ்வார். கற்பார் ராமபிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பா முதலா புல் எறும்பு ஆதி ஒன்று இன்றியே நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும் நற்பாலுக்கு உய்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே என்று. இந்த பாசுரத்திலே ராமபிரானுடைய ஆதி விசேஷமான தன்மையை அருளிச் செய்கிறார். தசரத சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையின்படி ராமபிரானை தெரிலேற்றி கொண்டு போய் கங்கை கரையில் விட்டு
திரும்பிய சுமந்தரன் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லுகிறான், மகாராஜரே, உம்முடைய திருக்குமாரன் நாட்டை விட்டு காட்டிற்கு புறப்பட்டு செல்லுகிறானே என்கிற துயரத்தினால் மரங்கள் எல்லாம் வாடி உலர்ந்து போயின. நதிகள், குளங்கள், குட்டைகளெல்லாம் கரையறிகளும் அடி வைக்க ஒண்ணாதபடி கொதிப்படைந்தன. சிறிய தோட்டங்கள், பெரிய தோட்டங்கள் என்கின்ற வித்தியாசமின்றி பொழில்களெல்லாம் இலை உயர்ந்து அழகழிய பெற்றன என்றானாம். இப்படி அச்சேதன வஸ்துக்களையும் கூட விசாரப்படுத்தி கொண்டே காட்டிற்கு எழுந்தருளினவன் 14 ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு மீண்டும் அயோத்திக்கு எழுந்தருள கையில் எல்லாம் செழிப்படைந்தனவாம். அப்படி அங்கே ராமபிரானாக 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் சென்றவன் இதோ திருமலையிலே எழுந்தருளி இங்கே வேங்கடவனாக நமக்கு சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கும் அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அந்த பகவானுக்கு ரக்ஷையை அணிவித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி, பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய விஸ்லேஷத்திலே ஓங்கியும், அதாவது உலர்ந்தும் ஓங்கியும் நின்றனவாம். வாடி உலர்ந்தும் ஓங்கியும் நின்றன. அச்சேதனங்கள் என்றால் அவன் குணப்பெருமையை என்னென்று சொல்லுவது? கம்பன் ராமனை நடத்தையில் நின்றுயர் நாயகன் என்று அவனுடைய குண விசேஷங்களை போற்றுகின்றார். சிலருக்கு சில குணங்கள் இருக்கும், இருக்காது. சகல கல்யாண குணங்களும் ஒருவனிடமே அடைந்திருக்குமா என்றால் அது சாத்தியமில்லாத விஷயம் என்போம். அதனால்தான் கோகுணவன் என்கின்ற வால்மீகியின் கேள்விக்கு சகல கல்யாண குணங்களும் பொருந்தியவன் ஸ்ரீ ராமபிரானே என்று நாரத பகவானே கூறுகிறார். கனு அஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவன் கசவீரியவான் தர்மஜ்ஞா சக்ருதக்ஞா சத்ருரக்ஞா ச சத்தியவாக்கியோ திருதவரதா என்று. அந்த ஸ்ரீராமன் யார் என்று சொன்னால் திருவேங்கடத்தில் உரைகின்ற திருவேங்கடவன் என்று துவங்கி ஆழ்வார் பாடுகிறார். இலங்கை பதிக்கு அன்றிரையாய அரக்கர் குலம் கெட்டவர் மாள கொடிப்புள் திரித்தாய் விலங்கல் குடிமி திருவேங்கடம் மேய அலங்கல் தொழவ முடியாய் அருளாயே என்கிறார். அந்த முற்காலத்திலே இலங்கை பதிக்கு லங்காபுரிக்கு ஆய அரசர்களாயிருந்தவர் அரக்கர்கள், மாலி முதலிய ராட்சசர்கள். குலம் கெட்டு மாள கும்பலோடே சிதறியோடி முடியும் படியாக தனக்கு கொடியன புல் பெரிய திருவடியை கருடனை திரித்தாய் சஞ்சரிப்பித்தவனே விலங்கல் குடிமி மேலே சஞ்சரிக்கின்ற சந்திர சூரியர்கள் விலகிப் போக வேண்டும். படிப்படியாக சிகரத்தையுடைய திருவேங்கடம் திருமலையிலே மேவி இருப்பானாய். துளபம் என்றால் திருத்துழாயினாலாகிய அலங்கல் மாலையை திருமுடியிலேயே அணிந்துள்ளவனே, அருளாய் கிருபை பண்ணி அருள வேண்டும் என்று கூறுகிறார் அந்த ஆழ்வார். அப்படி திருவேங்கடவனை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அக்னியை ஆவாகனம் செய்கிறார். யக்ஞ ரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. மேலும் இந்த அக்னியை ஆவாகனம் செய்து ஹோமத்தை செய்து இறுதியில பூர்ணாகுதி ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாஹிக மகோத்சவ கர்மணி ஔபாசனாக்னோ ஆகார கர்ம கரிஷ்யே. ஓம் யதோன்விந்திரம் சவாம சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா शुद्धैरुक्तैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो इन्द्रशुद्धो नागः शुद्धः ऋतुभिः शुद्धोरगम्नितारगशुद्धो ममद्दि सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो रगिं शुद्धो रत्नानि दाशसे शुद्धो वृत्राणि जग्नसे शुद्धो वासं शिशाससे स्तण्डिले भूमिमावाहयामि मयि देवाद्रविणमागदन्ता मय्या शिरस्तमयि देवहोतिः विषते सोमराजन् ओं जातवेदो भुवनस्सरेतैः
हव्यवाहकं शमीगर्भा घृतप्रशस्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन्तु गजा यक्षिदेवान् आयुर्धा अग्ने हविशोषशालो घृतप्रतीको घृतगो निरेद्धि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिपम् अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातके निहोदाधत्सि बर्हिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसभा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतश्रुचो वेन आवह सबुद्निगा उपमास्य विष्णा शतस्य गोनमशतस्य व्यवः ॐ भूर्ब्रह्मा नमवाहयामि ॐ भुवः प्रजापतिमावाहयामि ॐ सवः हिरण्यगर्भमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वः पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमर्चनम् ॐ सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदद्यकं सवीयं पितृश्रवणं यो ददास तस्मै ॐ भूः सोममवाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्गमवाहयामि ॐ सुवरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमान च देहे ॐ पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमान च देहे ॐ प्रोक्ष पात्रादावामादाय कृष्णो ओस्या करेष्टो ओ अग्नगे एत्वा स्वाहा वेदिरसि बर्हिषे एत्वा स्वाहा बर्हिरसि सृग्स्वा स्वाहा दिवे त्वा अंतरिक्षाय गत्वा पृथिव्ये त्वा पोषाय गत्वा पश्चिमतः सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि ॐ विष्णुमावाहयामि ॐ महाविष्णुमावाहयामि ॐ सदा विष्णुमावाहयामि ॐ यापि नारायणमावाहयामि श्रुतासि घृतासि द्रवासि दृढासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सुन्दस्वानया पृथिव्यापो गृहीष्यामि ॐ ब्रह्मणप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छ देहि ओं प्रणय ओं सौम प्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमानं च देहि ओं प्रणय को वप्रणयतो स वप्रणयत्पापो देहि घृतं विहरामि चरुं विहरामि दक्षिणप्रणितो ब्राह्मणतीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणितो दैवेन तीर्थेन ॐ अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवस्वस्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि श्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टं निर्वपामि इन्द्राय जुष्टं निर्वपामि अग्नेय जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्नये जुष्टं निर्वपामि सोमाय जुष्टं निर्वपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्टं निर्वपामि प्रजापतये जुष्टं निर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टं निर्वपामि इन्द्राय जुष्टं निर्वपामि वसुभ्यो जुष्टं निर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टं निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टं निर्वपामि अपौपस्पृश्य ओं श्री विष्णवे जुष्टं निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टं निर्वपामि मित्राय जुष्टं निर्वपामि वरुणाय जुष्टं निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टं निर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टं निर्वपामि पूष्णे जुष्टं निर्वपामि कक्षाय जुष्टं निर्वपामि कक्षदेवतसोमाय जुष्टं निर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निर्वपामि यज्ञदेवतेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि आज्यं तृप्यतिश्रगामि चरुं तृप्यतिश्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसे समितिर्स्वाहा
चित्पतिस्वापनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिभिः स्वाहा देवस्वा सविता पुनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा ओम ईशानाय नमः ओम अग्निगे नमः ओम जातवेदसे नमः ओम सहौजसे नमः ओम अजिराप्रभवे नमः ओम नर्गाधसे नमः ओम पंक्तिनादसे नमः ओम विसर्पिणे नमः ओम अग्निपुरुषाय नमः सरस्वती नमः देवसवितप्रसभा ओम अयंत युग्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धगचास्मां प्रजगा पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधगा अस्मिन् आघार कर्मणि ब्रह्मं सोममिद्ममाधास्ते आधस्वा समेधग स्वाहा वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्या चरगं सावित्राद्भिर्गृहीत्वा पुनरभिगार्ग्या ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुति विपर्यास न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रसभा ओम मतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तताम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधा देवतं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारकन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिव्यवचक्षुरादतग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు
బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల. కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల. చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతమిందిరా వసుమతీం శంభో బిపార్శ్వద్వయం కేయోరాంగదహార కుండలధరం దీప్తం విశ్వధరం బిభం సుచక్ర శంఖం కటివరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చిహ్నం భజే ప్రళంబ సూత్రోజ్వలమాల్య భూషణం నమామ్యహం శ్రీవేంకటశైలనాయకం నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్వత్రికశ్యప మరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధా అద భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య పరిమితశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయవ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సపర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామిన మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సర్వభౌమ సుప్రదేకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతే సంయమనే రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలకావతే యశోవతే అష్టదేవ పరివిరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్తి వర్ణవాయు కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచల బలగితే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి అదృక్షవద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీళావృత భద్రాశ్వకేతుమాలా హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరు తామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్య వ్రణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే
महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे सत्यव्रतक्षेत्रे सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्सृष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमेहनि द्वितीययामे त्रयोदशघटिका द्विचत्वारिंशत् द्विघटिकासु गतासु तृतीयमुहूर्ते प्रथमप्राणायामकाले पुरुहूतनामध्यगेन्द्रसमगे पार्थिवकूर्म प्रडगानन्त श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे स्वायंभुव स्वारोचिषोत्तमतामसरैवतचाक्षुष वैवस्वत सूर्यसावर्णी धर्मसावर्णी दक्षसावर्णी रुद्रसावर्णी ब्रह्मसावर्णी इंद्रसावर्णी वेदसावर्णाक सप्तकल्पानां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्रैकसप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्वतीतेषु तदुपर्यष्टाविंशतिमे महायुगे अष्टाविंशतिसहस्रान्वित सप्तदशलक्षाब्दे कृतयुगे ज्ञाते षण्णवते सहस्रान्वित द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे ज्ञाते चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे ज्ञाते द्वात्रिंशत् सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य षट्चकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन शके मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां च कुंभीपाकलोहित धामा तपसंगात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमंडल पर्यन्तं कृतराशेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैकतिलापकर्षण क्रमेण सर्वराश्यपकर्षण संमितकाले श्रीहरिलोके निवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफल सिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्यां भगवतो नारायणस्य श्रियपते पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिनीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः परव्योह विभव अंतर्गामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारभिर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिर्दिव्य महर्षिभिरुक्ता गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य नंदक कौमोदकी शारंग दिव्य पंचायुद्धालंकृत कोटि सूर्य समप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्शास्त्रोक्त मार्गेण अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह भेदेन प्रवर्तमानस्य परव्योह विभव अंतर्यामी अर्चावतार रूपकस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय स्वकर्मणोऽप्यादिवशात् उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव सर्वण पौत्रायाम् अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमन किरण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार भगवत प्रद्युम्नावतारकस्य श्री महाविष्णोः
आदिनारायण शर्मण पुत्राय अंगीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रिगारश्रेय प्रभरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकटक केयूरहार दिव्याभरण भूषिताय श्रीवत्सांकित वक्षस्काय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्योपेत शोभिताय दिव्य पीतांबरधराय प्रपन्न पारिजाताय स्वर्णगरुडवाहन रूढाय निजावताराय अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो दिव्य रूपकाय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र रूपाय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यज सामदर्पणज्ञ सूत्रोद्भवस्य चतुर्वेद शाखाध्यायिनीं भार्गवचवनाप्नुवान् और्ववेदल पंचार्षेय प्रवरान्विता भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां भृगो संकल्पतनयां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां अयोनिजां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि ऋग्यज सामदर्पणज्ञ सूत्रोद्भवस्य चतुर्वेद शाखाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैद्रुवत्रगार्षेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं कश्यप संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां अयोनिजां भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतेः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ஓம் நமோ நாராயணாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். மத்ஸ்யாவதாரத்திலே அந்த பகவான் அங்கே வேதநாராயண சுவாமியாக எழுந்தருளி நாகலாபுரத்திலே கொலுவீற்றிருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது வேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ராமபிரானை பற்றி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்று அந்த ராமபிரானுடைய வருடாந்திர பிரம்மோத்சவத்திலே கருட சேவை ஆரம்பமாகிறது இரவு. அந்த வேளையிலே ராமபிரானையும் சேவிக்கலாம். அதற்கு முன் இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீராமன் யார் என்று சொன்னால் திருவேங்கடத்தில் உரைகின்ற திருவேங்கடவன் என்று துவங்கி ஆழ்வார் பாடுகிறார். இலங்கைக்கு பதிக்கு அன்றிரையாய் அரக்கர் குலம் கெட்டவர் மாளக் கொடிப்புள் திரித்தாய் விலங்கல் குடுமி திருவேங்கடம் மேய அலங்கல் தொழப முடியாய் அருளாயே என்கிறார். அதாவது முன்பு காலத்தில் இலங்கைக்கு லங்காபுரி என்ற பெயர். அதிலே அரசராய் இருந்தவர்கள் அனைவரும் கூட அரக்கர்கள்தான், ராட்சசர்கள்தான். குலம் கெட்டு மாள என்றால் கும்பலோடு சிதறியோடி முடும்படியாக தந்த பெரிய திருவடியை கருடனை திரித்தாய் சாஞ்சரித்தவனே என்றால் விலங்கல் குடுமி என்று மேலே சஞ்சரிக்கின்ற சந்திர சூரியர்கள் என்றும் விளங்கி போக வேண்டும் என்றும் அப்படி சிகரத்தை உடைய திருவேங்கடம் திருமலையிலே மேவி இருப்பவனாய் திருத்துழாயினால் ஆகிய அலங்கல் மாலையை திருமுடியிலே அணிந்துள்ளவனே அருளாய் அடியேன் மீது கிருபை பண்ணி அருள வேண்டும் என்கிறார். இலங்கையிலேயே ராவணன் என்ற கொடியவன் ஆண்டான். அவனை அழிப்பதற்காக பகவான் ராமாவதாரமாக அவதரித்தான் என்பது வரை நமக்கு தெரியும். அப்படியானால்
ராவணனுக்கு முன்னால் இலங்கையிலே அரக்கர்கள் இல்லையா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த வேங்கடத்திலே பாசுரத்தை அற்புதமாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். இலங்கைக்கும் அங்கிருந்தபடி ஏனைய உலகுக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் அரக்கர் கூட்டம் ராவணனுக்கு முன்னாலும் இருந்தது. அவர்கள் கொட்டத்தை அடக்க பகவான் கருட வாகனத்தின் மீது ஏறி அரக்கர் குலத்தை சிதறியடித்தாராம். ஆயினும் புற்று இருக்கும் இடத்தை பாம்புகள் சென்று அடைவது போல இலங்கையிலே அடுத்தடுத்து ராவணாதிகள் போன்ற அரக்கர்களே இருந்தார்கள் என்கிறது அந்த பாசுரம். ராவணனுக்கு முன்னால் இலங்கையில் இருந்த அரக்கர்கள் பற்றிய செய்திகள் உத்தரகாண்டத்திலே தெரிவிக்கிறது. ஹேதி மற்றும் பிரஹேதி என்ற 2 சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் மகாபலியின் பிரிக்க முடியாத தோழர்கள். பிரஹேதி திருமணமாகாதவர். ஹேதி காலாவின் சகோதரியான பாயாவை திருமணம் செய்து வித்யுத் கேசா என்ற மகனை பெற்றாராம். வித்யுத் கேசா சந்தியாவின் மகள் சாலகடங்காவை மணந்து கொண்டு சுகேசா என்ற மகனை பெற்றானாம். மணிமயா என்ற கிராம பணியின் மகள் தேவவதியை மணந்தான். தேவவதிக்கு மாலி, கமாலி, மால்யவன் என்று 3 மகன்கள் பிறந்தனராம். 3 சகோதரர்களும் இளம் வயதிலேயே பெரும் வலிமையை பெற முடிவு செய்து தாங்கள் தவம் செய்ய தொடங்கினார்கள். அவர்களின் தவம் மிகவும் கடுமையானதாக மாறிய பொழுது பிரம்மா அவர்களின் முன் தோன்றி அவர்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்டாராம். இது மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து தாரணம் நடைபெற உள்ளது. ஓம் பிரஜாபதி சோமகம் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரகோ வேத அன்வசுர்ஜந்தா தான் ஹஸ்தே குருதா अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतूनां कंठे बध्नामि शतगे रक्षन्तु शरदां शतं श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमकं राजानमसृजता तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतूनां कंठे बध्नामि शतगे रक्षन्तु शरदां शतं भूदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तोस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
मृत्युपाशात् तदेकं राजा वरुणो न मन्यतां यदि यज्ञस्त्रीपौत्रमकन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां करहपत्यः प्रजामुञ्चत मृत्युपाशात् तदेकं राजा वरुणो न मन्यतां यदि यज्ञस्त्रीपौत्रमकन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां करहपत्यः प्रजामस्येनैतदीर्घमायुः अशोन्योपस्ताजिवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रपद्यतां यज्ञस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा भोगं सवस्वाहा ॐ भोर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्दमग्रस्ताः अनुमतेन्दमग्रस्ताः सरस्वतेन्दमग्रस्ताः देवसविता प्रासादेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्य ॐ इमान् लाजान्नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यतां यन्नार्गवब्रोते अग्नौ लाजानवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतरे धन्तां ज्ञातगो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजान्नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यतां यन्नार्गवब्रोते अग्नौ लाजानवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतरे धन्तां ज्ञातगो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजान्नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् स्तदग्निरनुमन्यतां यन्नार्गवब्रोते अग्नौ लाजान्नवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतरे धन्तां ज्ञातगो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्दमग्रस्ताः अनुमतेन्दमग्रस्ताः सरस्वतेन्दमग्रस्ताः देवसविता प्रासादेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ कृतलाजहोमान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुतिविपर्यास न्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ॐ ततो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यां सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतु गतो व्रतानि भस्वसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिव्येव चक्षुरादतग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृभागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासादेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वहोमान्ते औपासनाग्नौ एतत्कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टात् अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसवा यतस्य कर्मणोत्यरेरिचं यद्वान् विनविहाकरम् अग्निष्टत्विष्टकृद्विद्वान् सर्वगं स्विष्टकं सुहतं करोतु मे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहतहुताहुतेनां कामानागं समर्देत्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगिन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा
सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमविश्वे स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदां विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनागरं चक्षुरादतमक्षौ स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं द्युरिष्ये स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवेभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा रुद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा यदोऽस्य दिशीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा ॐ सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ते सप्तयोनिरापृणस्वाकृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीर्भुक्तः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वांशरश्चैव भुक्तः स्वाहा अग्निजर्नः स्वाहा वेदर्जर्नः स्वाहा द्योर्जर्नः स्वाहा पृथिवीजर्नः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वांशरश्चैव जीर्णः स्वाहा समन्तां बर्हिर्हविषाकृतेन समादित्वैरिव सुविसमद्भिः पूर्णाहुतिवत्तमान्ते आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा पूर्णाहुतिमुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्ते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वांसरश्चैव तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रं मे भुगा स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भुगा स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भुगा स्वाहा विष्णु सदनमसे दक्षिणतो विष्णु सदनमसे उत्तरतो विष्णु सदनमसे प्राच्यां विष्णु सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष आप्यायन्तामापवोषधयो मरतां प्रशदयस्तदिवं गच्छ ततो न वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनकं भूतिस्मादेति भस्ममालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्तान भूर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे ओम च मे स्वरश्च मे यज्ञोपजते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपयत्यतिरिक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडर्धहारमुपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्पुतन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषानां कृष्णान् स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायते समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः समाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमर्यन् समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः समाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहारं निवेदयामि। आज्यशेषं समर्पयामि। तत्सब्रह्मार्पणमस्तु। सर्वं श्री भोनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது ஜபத்தினை செய்து அதன் பிறகு வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. பக்தர்களே, லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் பூர்ணாகூதியை சேவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். வாரணம் 1000 என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். நாச்சியார் திருமொழி என்னும் 143 பாடல்களிலிருந்து 11 பாசுரங்களை எடுத்து அதிலே தான் அந்த வட்டபத்திர சாயி என்னும் ரங்கமன்னாரை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் கனவு கண்டேன் என்றும் அந்த கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள் அர்ச்சக சுவாமியும் மற்றொருவரும். இதோ அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது மாலைகளை மாற்றுவது மாலா பரிவர்த்தனம். எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் இடையே அந்த மாலைகள் மாற்றப்படுகின்றன. முதலில் பெருமாள் அணிந்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அதைத் தொடர்ந்து பூமி பிராட்டிக்கும் அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலை லக்ஷ்மி பிராட்டி என்று கூறப்படும் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த லக்ஷ்மி தேவியினுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலையானது திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கு கொண்டு சென்று சாத்தப்படுகிறது. வெங்கடரமணா கோவிந்தா சங்கடஹரணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வேங்கடவனுக்கு சாத்திய மாலையை கொண்டு சென்று பூமி பிராட்டி என்கின்ற மகாலட்சுமிக்கு, பூமி பிராட்டி அதாவது மகாலட்சுமியின் அம்சமாக அவதரித்தவள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பூமி பிராட்டியின் கழுத்திலே இருந்த மாலையை கொண்டு சென்று மீண்டும் பகவானுக்கே சாத்துகிறார் வேங்கடமுடையானுக்கு. சப்தகிரி வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இதோ 3 முறை மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு மாற்றியாகிவிட்டது. அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பிரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம் அந்த மகாபிரபுவை. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா. அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அந்த அக்ஷதை மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அதன் பிறகு அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்கிறோம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ